How to determine one's Swadharma? How to determine one's Swadharma? The only reply to this question is that is natural. It comes naturally to everyone. The very idea of going in search of it is strange. When a man is born, his Swadharma to takes birth. Swadharma, like one's mother, is not to be searched for. It is already there when one is born. The world existed before we were born and it will be there after our departure. We are a part of the stream of existence. Service of our parents and our neighbors is our naturally occurring duty. We also have the experience of our inborn natural urges. They are common to all. We feel hunger and thirst. It is therefore our natural dharma to feed the hungry and give water to the thirsty. Serving others, doing good to others, this is the our dharma, which we do not have to go in search for. In fact, if we find that there is a search on for Swadharma, it is a sure sign that there is something wrong. Something is being done which is neither rightful nor righteous. A man devoted to service does not have to search for the type and form of service. He find his work laid out before him, but it has to be borne in mind that what appears to have come unsought is not necessarily a righteous duty. Suppose a farmer comes to me at night and says, let us shift the fence of my farm by a few feet so that the area of my farm will be larger. We can do it unnoticed. Although this work has certainly come unsought before me, it is clearly not my duty as it is unethical. क्या जबरदस्त बोले ना. नेचुरली जो है सामने आता है अपने, वो स्वधर्म है. ठीक है. फिर बाद में Yes. बताया कि यानी हम उसको ढूंढने नहीं जा सकते स्वधर्म. स्वधर्म को ढूंढने जा रहे हो तो वो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कुछ सामने से आ रहा है वो सारा तुम्हारा स्वधर्म है. ट्रिक समझे. हाँ, समझा. एग्जाम्पल क्या जबरदस्त दिया है. कि नहीं, वो तो मैंने थोड़ी बुलाया था, वो अपने आप से आया था, यानी वो मेरा स्वधर्म था कि उसकी हेल्प करो. सर्विस करना हमारा स्वधर्म है, तो वो भी तो हेल्प मांगने ही आया था ना, तो उसके भी सर्विस करो तो स्वधर्म होगा. क्या फर्क है कि नेचुरली क्या है उसको समझना है. वो तभी समझोगे जब तुम नेचुरल रहोगे. हमने अपने आप को इतना आर्टिफिशियल बना रखा है कि नेचुरल क्या है हमारे लिए वो हमारे को पकड़ में नहीं आता है. So you have to be natural. Stop doing, but be. Start being. When you are being natural, you are automatically in Swadharma. Then whatever is coming in front of you will be only your Swadharma. You will attract only Swadharma. Law of attraction भी वही काम करता है. ये बात समझ में आ गई. इसको फिर से पढ़ना है पैरा पर. हाँ, पढ़ते हैं. मैं पढ़ती हूँ. आप पढ़ो. Man devoted to service
does not have to search for the type and form of service. तुम सर्विस करने के लिए निकले हो, जन सेवा, लोक सेवा, सेवा करने के लिए निकले हो, तो तुम्हारे को ये देखने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार की सेवा करनी है. He finds work laid out before him. यदि सेवा का संकल्प यदि मन में पक्का है, सही है, उसमें दुविधा नहीं है, उसमें फिकलनेस नहीं है. अभी थोड़ी सी देर के लिए तुमको वो लगता है सेवा करनी है और फिर बाद में लगता है नहीं करनी है, वैसा नहीं है. यदि सच में सेवा के लिए निकले हो तो क्या सेवा करनी है वो अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी. पहले सेवा यानी कि कर्म योग का निश्चय तो करो, दृढ़ निश्चय तो करो, उस पर स्थिर तो हो जाओ, तब तुम्हारे सामने आएगा कि तुम्हारा क्या स्वधर्म है, तुम्हारे को किस लिए भगवान ने पैदा किया है, क्या सेवा करने के लिए, जिस काबिल बनाया है उस काबिल बनाया है. बट he has to be borne in mind that what appears to have come unsought is not necessarily a righteous duty. जो बिना बुलाए जो आ गया है जरूरी नहीं है वो ही तुम्हारी सेवा है, वो ही तुम्हारा स्वधर्म है. Suppose a farmer comes to me at night and says, let us shift the fence of my farm a few feet so that the area of my farm will be larger. We can do it unnoticed, although this work has certainly come unsought before me. It is clearly not my duty as it is unethical. स्वधर्म नहीं है. चलो आगे चलो. The Chaturvarnya system appeals to me essentially because there are naturalness and dharma, duty in it. Nothing can be gained by avoiding one's swadharma. My birth gives me my parents. Can I say that I do not like them? Whatever I might feel, they will continue to be my parents. The parents' calling comes naturally to the children. It is distinguished characteristic of Chaturvarnya that the people should continue to follow their ancestral callings. Provided they are not unethical, this system has now decayed and otherness to it has become difficult. But it would be nice if it could be properly removed, reformed, and refined. Nowadays, the first 25-30 years of life are spent in learning a new vocation, and thereafter people try to get a job or start a business. Thus, one spends the first 25 years of his life without doing anything else, and his education has absolutely no connection with life. This period is taken as the time for preparation for the life ahead, which perhaps means that it is not part of life. Life is to come later. It is as if one has to get education first and life thereafter. Learning and living have thus been divorced from each other. But anything unrelated to living is akin to death. The average expectation of life in India is 23 years, and people spend 25 years in learning a vocation. The best and the most precious period in life, which should be used in fulfilling oneself through energetic and enthusiastic service to the society, is thus wasted.
but life is not child's play. It is indeed tragic that a valuable part of life is wasted in finding a calling. To avoid this, Hinduism has devised the concept of Varna, Varna Dharma. हम्म, ठीक है। आज के दुनिया में जो पारंपरिक काम है उसको नहीं करके अलग अलग कामों में जो लोग जाते हैं, तो उसके बारे में क्या उसका नुकसान है वो बता रहे हैं। रख- पढ़ना आगे कि कर, करूं? टाइम है तो करो, क्योंकि ऑलरेडी 4 o'clock हो रहे हैं, तेरे को जाना है ना। हाँ, मेरे को जाना है। स्वधर्म, स्वधर्म निभाना पड़ेगा। 5 बजे मुझे निकलना है, उसके पहले के सब काम निपटाने हैं। तो फिर बट ये आइडिया मुझे अच्छा लगा मैम। क्या। वो आपने बोला ना लिखने का, हम्म। आज करो। मेरा स्वधर्म क्या। रोज तुम्हारा आइडिया बदलता रहता है स्वधर्म का, तो उसमें सही में स्वधर्म क्या है वो समझ में आ जाएगा। यदि लिखने लगोगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा तो। हम्म। चलो मिलते हैं अगले गुरुवार को। सोमवार को आओगे ना क्लास ओके। में। हाँ हाँ, स्वधर्म सोमवार को 3 बजे। हाँ, वैराग्य करना है। चलो। चलो होमवर्क करना, हाँ। हाँ हाँ।